So we are beginning with this fast track course today, and it is a course designed for 125 days. In that 125 days, generally you will be getting a 2 lecture every day. That means if you get 2 lecture every day, that means about 250. But we'll be leaving in fact the Sunday for test and answer writing. So what we will be trying to do in this, about 2/3 content will be conducted live, and about 1/3 will be in the pre-recorded format. That means you will be getting some content in the pre-recorded format, but majority content in the live lecture session. And the purpose is basically to cover the entire content by, we will try to cover it by April end, although 125 days will be around I think 10th or 11th of May. But we will try to complete by April end, so that you will have about 45 days for answer writing, for revision purpose, because examination for this year 2026 is scheduled on 19th, 20th and 21st of June. Clear? So first I will basically give you the overview what we are going to start. We will be starting this session with the macroeconomics, part of Gen Economics 2 paper. So initial few lecture will be basically for Gen Economics 2 part, and then you will be getting a schedule. Today we will have only one lecture, but from tomorrow there will be two lecture, and we will be starting basically with the general studies. Completely will be the live session. English will be the live session, then econometrics will be a live session, macro will be conducted live. Maybe we will be uploading the Indian economy part, which has been just concluded in the previous batch in the pre-recorded format. The first thing is that just see the course content part of it. You are familiar with the pattern of the examination. You have to just remember one thing: you need to score about 45 to 50% to clear this exam. 45 to 50% to clear this exam. Last year, that is 2024, the cutoff for interview was 419. 419 out of 1000 for interview call, that is less than 42%. This year, as the number of seats were less, and it was just only 12 seats there, so the cutoff was 464 I guess for the interview call for the general category. So if you score about 45 to 50%, that is a good score in the economy service. But that brings an important question here and a kind of paradox. Paradox is that number of seats are less. If the seats are less, then cutoff should have been higher, but the cutoff is also lower. Now few reasons why cutoff is lower for economy service. One, the content is very wide, in the sense suppose you start with the Gen Economics 1 paper. The Gen Economics 1 paper itself will have two parts. One part will be the complete microeconomics, and the second part is complete maths, stats and econometrics. This section alone will be taking about 35 to 40 lectures, and this again will be taking about 40 lectures. That means only to cover Gen Economics 1 paper 70 to 80 lecture will be required. Consumer demand, production, theory of value is in fact market structure, then distribution and welfare. Some question, remember the some part of economic service syllabus is also included in the civil service. So if you are appearing for both, just remember ये distribution और welfare तो common हो जाता है, but what you do additionally in the economic service is consumer demand and theory of production. They are not part of the syllabus for the economics optional, and this is completely only for economic service, not for the civil service optional. Second paper is having 8 parts. Paper 2, Gen Economics 2, 8 part. There are some minor topic like economic thought, national income accounting, financial and capital market. So topic 1, 2 and this 4th. Rest are larger topic like macro. Macro is in fact written as topic 3, theory of employment, output, inflation, money and finance. तो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है वहाँ पे. Theory of employment, output, money and finance. Then economic growth and development, complete all growth models. Then entire international economics, entire balance of payment and global institution. So the content in Gen Economics 2 is very wide. Third paper is including public finance, environmental economics in detail, environmental accounting will also be there. Industrial economics is mainly micro.
तो फर्स्ट पेपर का जहाँ पे आपने थियरी या वैल्यू लिखा है दिस टॉपिक एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स इज बेसिकली वेरी सिमिलर. यू विल फाइंड सम क्वेश्चन जो कभी पेपर में जनरल इकोनॉमिक्स 1 में आ रखा है और वही क्वेश्चन कभी जनरल इकोनॉमिक्स 3 के अंदर आ रखा है. सो थर्ड पेपर इज हैविंग 4 पार्ट्स एंड देन द इंडियन इकोनॉमी पार्ट. Indian economy having 11 subtopics. Clear? Now this is basically the pattern. Now for every topic you will be having the topic wise separated question. You can find that topic wise separated question here like this topic wise as well as year wise. ये question आपको portal पे वहाँ मिल जाएगा. You will get this. Like for example, if you start with this theory of employment, output, inflation, money and finance. तो फ्रॉम दिस टॉपिक अभी तक जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो एक जगह सेग्रीगेटेड. क्लियर? सो विल बी रेफरिंग टू दैट क्वेश्चन इन दिस क्लास ऑल्सो. बट वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर you have to incorporate your daily answer writing practice and the test series. So in the test series category we have 20 tests. Those 3 are tests. You can begin those tests in the month of February. There is no need to start just right now the 3 hour test. You can start from the February. That still you will have plenty of time. फरवरी के मंथ में भी अगर आप 10 डेज के गैप पे लिखते हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल you have completed 9 tests. Then in the month of May and June you can write the remaining 10 tests, 10 or 11 tests. But your daily answer schedule, like this will be the schedule. You have to basically just follow. It is not necessarily synchronized with the lecture कि lecture के अंदर जो हो रहा है वही कर रहे हैं. But suppose you start with the day 1, day 2, day 3, day 4. Initial days has been allocated for the micro market structure welfare distribution and it started actually from 30th of November. So we will be getting access for the same topic. So already many model answer and discussion already uploaded there. It is ongoing, it is still going, but I think 30-40 already uploaded. So for example, suppose if you start today with the macroeconomics, then you can straight away begin with the macro part here with the classical model. It will take about 2 to 3 lecture to complete the classical model. Then you can write day 8 and day 9, the daily answer. So you have to first see the question paper, see the model answer. A detailed answer will be available. Also see the discussion lecture. Try to learn it and then write it. It is not that you have writing first, then referring to the model answer, then again writing it. First read the model answer, see the discussion and then write it separately. That will help you in learning the notes. So this will be basically done in that जो topic यहाँ पे होता जाएगा class के अंदर, you have to basically cover it from the daily answer topic as well. Then the regular test. A regular test is basically arranged here at the end written, that complete schedule. It starts with general economics 2 part, then 3, then Indian economy and then G1. That is sectional. One part of general economics 2 will be asked in the first section, first test. One part of general economics 3 will be asked in this test. So first round will be sectional, second round is also sectional. Third round will become comprehensive. That means if I divide general economics into 2 parts, there are 8 topics divided into 2 parts. So in the first test there will be only 4 topics. In the next test there will be remaining 4. But in the third test it will be all 8. In the fourth test it will be all 8. So initial is basically sectional 10 and then 10 full length syllabus. But you can begin this in the, I will say, in the month of February. Clear? So we can begin first of all with the macroeconomics. You will be getting the schedule. Every day you will be added what will be the schedule, that is class for the next day. You will be added to a WhatsApp group, in that will be uploading informing you about the schedule for the upcoming days. तो मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, इसी में क्लास होगी। हाँ, ये अभी कॉमन रहेगा ये वाला पार्ट, फिर 9 से फिर दोबारा एक सेपरेट फाउंडेशन बैच के लिए ऑप्शनल के लिए वो भी स्टार्ट हो रहा है. बट दिस इज बेसिकली फॉर द फास्ट ट्रैक. फास्ट ट्रैक के अंदर जो क्लासेज होंगी उसमें नंबर ऑफ लेक्चर आई सेड मंडे टू सैटरडे, दैट मीन्स 2 लेक्चर एवरी डे, दैट मीन्स इट विल बी 12.
We will be starting from 9th, basically the foundation batch. In that Monday to Thursday there will be only 4 lecture for those students who attempt is in 2027, for whether it is civil service or whether it is for the Indian economic service. If your attempt is in 2027, then you have to attend only 4 lectures, but that 4 lecture is basically common. It is part of the fast track course also. Clear? So we can begin with first macroeconomics. You can write okay, first thing about macro is that just divide this entire macroeconomics broadly into 2 parts. Broadly into 2 parts based upon certain set of principles followed by classical economics and certain set of principles followed by Keynes, and their follower are referred as Keynesian economists. So macro is in fact divided into 2 parts based upon these are the 2 school of thought. So these 2 school of thought follow certain guidelines, certain follow assumptions, they follow certain principles. So what are the principles followed by classical economists? What are the principles followed by Keynesian economists? So first I will introduce you about the difference between the classical and the Keynesian. Remember, before 1936 the entire economics was dominated by classical economists. Keynes came into picture from 1936. 1936 onwards we follow Keynesian. Nowadays some economists follow classical, but they have modified classical. They were known as neoclassical or post-classical. Some follow Keynes, but they have modified Keynesian argument. They will be known as post-Keynesian or neo-Keynesian. Some focus on synthesizing these 2 concepts. So there are different school of thought. 1936 se pehle it was classical, 1936 onwards basically it is Keynesian. 1960s or late 1960s we can say we also started studying the neo classical in the form of Friedman का contribution है, monetarist contribution है. So there are different school of thought. Macro के concept evolve होते हैं. Unlike micro जो थोड़ा static part है, macro के concept evolve होंगे. With respect to time वो change होता जाएगा. So first understand what was and just think, don't try to be judgmental in the sense ki which one is correct. Both are in fact correct. Both are correct in their own way. The classical economics, when we study the classical economics is basically a long run description of economy. Keynesian economics is short run description of economy. I will elaborate what is the meaning of it. Classical economics is long run description of economy. Keynesian economics is short run description of economy. In classical model I will write y, and whenever I write y in macro just mind में रखिएगा. So GDP है, gross domestic product की बात हो रही है. तो y is a function of capital, labor, technology and so on. But in macro we also write y equal to AD. y equal to AD लिखना भी सही है, और y as a function of capital labor लिख रहे हैं वो भी सही है. If I ask why GDP of India in 2025-26 is higher as compared to what it used to be in 1950-51. 1950-51 के GDP के comparison में today GDP is very high. But what could be the reason? Why it is high? Why we are able to produce more output? You can say that we are able to produce more of output because we have more plant and machinery, we have better technology, we have more labor, we have more efficient labor. But if I say that the growth rate of 2025-26 is lower as compared to the growth rate of 2024-25, so why the GDP growth rate declined? What could be the reason? You can say the GDP growth rate has declined because demand in the current year was less as compared to demand in the last year. There was lack of demand, less demand. ऐसा नहीं कि प्लांट और मशीनरी कम हो गए 1 ईयर में या लेबर डिक्रीज हो गए.
या उसकी एफिशिएंसी कम होगी, दोज आर नॉट पॉसिबल. नाउ 2025-26 द ग्रोथ रेट इज लोअर मेनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिमांड. दैट मीन्स demand is determining the output in the short run. When I am comparing 2025-26 with 1950-51, my approach is long run. In long run, I will emphasize which factor? Capital, labor, efficiency, technology. But when I am comparing 2025-26 with 24-25, I am taking basically a short run view of the economy. In that short run, I will emphasize on एग्रीगेट डिमांड. डिमांड प्ले द रोल इन डिटरमाइनिंग द आउटपुट. केन्स के कंसेप्ट में डिमांड विल डिटरमाइन द आउटपुट, क्लासिकल में सप्लाई विल डिटरमाइन द आउटपुट. क्लासिकल मॉडल इज अ सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, केनेशियन मॉडल इज अ डिमांड साइड इकोनॉमिक्स. क्लासिकल मॉडल इज बेसिकली अ सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स. केनेशियन कंसेप्ट इज demand side economics. Classical is supply side, Keynesian is a demand side economics. Classical is long run, Keynesian is short run. In classical I will write output determined by capital and labor, in Keynesian I will write output determined by aggregate demand. Now when you proceed further to for differentiating between classical and Keynesian, another important argument promoted by classical is that economy is always characterized by full employment. Economy is always characterized by full employment. And what is the meaning of the term full employment? Full employment का मतलब ये नहीं होता कि everyone is employed. Full employment का मतलब क्या है? At the current market wage, लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई बराबर है. अगर लेबर का डिमांड और सप्लाई बराबर है तो हम कहेंगे वो फुल एम्प्लॉयमेंट है. दैट मीन्स एट द करंट वेज रेट दोज हु आर विलिंग टू वर्क आर एबल टू गेट जॉब. सो बट हाउ फुल एम्प्लॉयमेंट इज इंश्योर्ड इन द क्लासिकल मॉडल? क्लासिकल मॉडल से दैट फुल एम्प्लॉयमेंट इज गारंटीड मेनली बिकॉज wages are flexible. So we follow wage flexibility in the classical model. Wages are flexible and flexibility of wage ensure full employment. It means अगर लेबर का डिमांड, लेबर को एन से डिनोट किया जा रहा है, अगर लेबर का डिमांड लेबर के सप्लाई से ज़्यादा है तो क्लासिकल मॉडल कहता है कि इफ डिमांड विल बी मोर देन वेज विल इंक्रीज, एंड इफ सप्लाई ऑफ लेबर विल बी मोर देन वेज विल reduce, and wage will change immediately so that demand and supply always becomes equal, and if they are equal then we have full employment. So full employment is guaranteed by flexibility of wage. Keynes disagree with that concept. Keynes के concept में कह रहे हैं कि economy is characterized by unemployment. Economy is not characterized by full employment. Economy is characterized by unemployment. But why there will be unemployment? Unemployment का मतलब हो गया लेबर का सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है. लेबर सप्लाई इज मोर एंड डिमांड इज, अनएम्प्लॉयमेंट तभी होगा इकोनॉमी में व्हेन सप्लाई ऑफ लेबर इज मोर एंड डिमांड फॉर लेबर इज लेस. क्लासिकल कह रहे हैं कि अगर ऐसा कंडीशन होगा, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो वेज कम हो जाएंगे. केन्स का आर्गूमेंट है कि वेजेस आर रिजिड, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल. एंड व्हाट मेक्स वेज रिजिड? गवर्नमेंट का एक मिनिमम वेज लॉ है. यू कांट गिव वेज लोअर देन दैट. देयर इज अ लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो ऑन वेज. देयर इज अ मिनिमम वेज लॉ. देयर इज प्रेजेंस ऑफ लेबर यूनियन. Union will not allow wages to fall below a limit. So there are certain reasons why wages are not flexible. It is flexible only upward, not flexible downward. So there is unemployment due to wage rigidity. There is unemployment due to wage rigidity. Wage की rigidity की वजह से unemployment है. Unemployment due to wage rigidity. Classical concept says there is a full employment due to flexibility of wage. Keynes argument is there is unemployment due to rigidity of wage. Another difference between classical and Keynesian economics is that when we study the classical concept,
Classical concept believes that supply creates its own demand, popularly known as Say's law. Supply creates its own demand. Supply creates its own demand. Just understand what is the meaning of this statement. When you JBC say that supply creates its own demand, how supply will create its own demand? If you supply a product, the classical thought is that if you supply a product, demand for that product is automatically generated. But how? Suppose we supply this pen, so how we can ensure that demand for this pen is generated? The argument given by classical is that if you supply any particular product, suppose you supply good X, कोई भी reference में वो product, in order to supply you need to produce it. And how we can produce any commodity? We can produce any commodity by using labor, land, capital, entrepreneur. To labor you will pay wage, to landowner you will pay rent, to capital owner you will pay interest, entrepreneur will take away profit. So production automatically generates income. Production generates income. And what is the use of that income? That income will be spent. Spent on what? Spent on the commodity that has been produced. In that way, supply creates its own demand. The statements say that supply creates its own demand mainly because production generates income and income will always be spent. मतलब money has only one role to play in classical model, that is to act as medium of exchange. Money का सिर्फ एक ही काम है, it act as medium of exchange. Money is held only for transaction purpose. That is basically the classical thought. Classical thought कह रहा है कि money is held only for medium of exchange. And money is demanded only for transaction purpose. There is no other purpose why we will be keeping cash. हम सिर्फ ट्रांजेक्शन करने के लिए कैश को रखते हैं, अदरवाइज देयर नो रीज़न. बट केन्स हैज़ अ डिफरेंट व्यू. केन्स ये नहीं कह रहा है कि जो क्लासिकल कह रहे हैं वो गलत है. केन्स का सिर्फ ये कहना है कि जो क्लासिकल आर्गूमेंट है वो इनकम्प्लीट है. केन्स इज नॉट सेइंग दैट मनी डज नॉट परफॉर्म मीडियम ऑफ एक्सचेंज. केन्स ये कह रहा है कि ऑल्सो परफॉर्म द रोल ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. Money is also held for some other purpose. And what is the other purpose of holding money? Speculative purpose of holding cash. If supply creates its own demand, if that is correct, तो ग्रेट डिप्रेशन होना ही नहीं चाहिए था. डिप्रेशन के समय क्या होता है? Is it lack of supply or lack of demand? It is lack of demand. है, supply तो अवेलेबल है. But अगर if supply creates its own demand, if that is correct, then they should not have been depression. तो Keynes actually explained depression. 1936 मतलब डिप्रेशन को उसने एक्सप्लेन कर रखा, 1920 ग्रेट डिप्रेशन को. तो केन्स केम अप विद बेसिकली विद द व्यू दैट मनी ऑल्सो एक्ट एज स्टोर ऑफ वैल्यू. मनी ऑल्सो एक्ट एज द स्टोर ऑफ वैल्यू एंड सप्लाई डज नॉट क्रिएट इट्स ओन डिमांड. मनी इज डिमांडेड नॉट ओनली फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस बट ऑल्सो फॉर speculative purpose. That means sometimes we prefer to keep idle cash rather than spend it. Classical concept कह रहा है कि if you have money, transaction के लिए money रखेंगे, but you have more than that money, you will always buy bond, you always invest it. But Keynes का कहना है कि sometimes it is better not to invest but to hold it in the form of speculative demand for money. And what is the meaning of speculative? What is speculating? What we are speculating? Speculate करेंगे future change in the interest rate or future change in the value of bond. Suppose I hold a bond but its value decreases. तो अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो इससे तो बेटर था कि हमने बॉन्ड ना रख करके कैश रखा होता. जैसे शेयर मार्केट है, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट द वैल्यू ऑफ शेयर इज गोइंग टू डिक्लाइन, इट इज़ बेटर टू सेल इट एंड कीप कैश. बट क्वेश्चन, व्हाई यू आर कीपिंग कैश? That is speculative. That is speculative purpose of holding cash.
तो केन्स के कंसेप्ट में मनी इज डिमांडेड फॉर ट्रांजेक्शन एज वेल एज speculative purpose. Then if you go on to elaborate the difference between classical and Keynesian, then classical and Keynesian differences are, in the classical concept we say that supply determines output. Supply determines output. Supply determines output because you have vertical aggregate supply curve. ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर विल बी डिराइविंग इट. क्लासिकल कंसेप्ट में एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसे बनेगी? वर्टिकल आएगी. वर्टिकल का मतलब होता है कि आप डिमांड को कहीं भी पोजीशन कर दो. इफ़ यू पोजीशन डिमांड एनीवेयर, इफ आई पोजीशन डिमांड हेयर और आई पोजीशन डिमांड हेयर और आई पोजीशन डिमांड बिलो इट, इससे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. So output is determined by supply side. Output get determined by the supply side, not by the demand. So what is the role of demand then? क्लासिकल मॉडल में AD का रोल क्या रहेगा फिर? अगर हमने AD को यहाँ मार्क कर रखा है तो प्राइस की वैल्यू ये होगी. If AD is plotted here, प्राइस की वैल्यू ये हो जाएगी. If AD is plotted here, P की वैल्यू ये हो जाएगी. तो what is the role of AD then? To determine price, not to determine output. But in the Keynesian concept, we will have horizontal IES. So what is the role of aggregate demand here? What is the role of AD in this case? It determines output. AD will determine the output. If AD is positioned here, output is this. If AD is more, output will be more. Because Keynes say that output get determined by डिमांड. केन्स के कंसेप्ट में y इज अ फंक्शन ऑफ AD. क्लासिकल कंसेप्ट में y इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी. क्लासिकल व्यू इज डिफरेंट, केनीशियन व्यू इज डिफरेंट. तो वी बेसिकली दिस रेफर टू दिस. जब आप डिफरेंसेस पॉइंट आउट करेंगे बिटवीन क्लासिकल एंड केनीशियन, तो क्लासिकल इज बेसिकली टेकिंग अ लॉन्ग रन डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी. So generally you will find all classical argument correct in long run, and generally we find all Keynesian argument correct in the short run. So when we take the long run view of the economy, it is classical. When we take the short run view, it is Keynesian. So in that means both are correct. When you write y as a function of capital, labor, that is also correct. When you write y equal to AD, that is also correct. This will be written in short run, this will be written in the long run. Classical says full employment will be there in the economy due to flexibility of wage. Keynes says there will be unemployment due to rigidity of wage. Classical says supply creates its own demand. Keynes do not agree with that. Classical says money perform only as medium of exchange role. Keynes says money also perform the role of store of value. Classical says money is demanded only for transaction purpose. Keynes says money is also demanded for speculative purpose. Supply determine output in the classical concept, demand determine output in the Keynesian concept. Then classical model is also based upon classical dichotomy. What is the meaning of the term dichotomy? Classical dichotomy. ये कई बार क्वेश्चन है. I will show that question. Dichotomy actually refers to separation between nominal variable and real variable. इकोनॉमी के नॉमिनल वेरिएबल अलग हैं, रियल वेरिएबल अलग हैं, and they are separate. In fact, change in nominal will not affect real. Real affected by real, nominal affected by nominal will not affect real. What are the nominal variables in macro? Nominal, like nominal interest rate, nominal wage, nominal GDP, nominal exchange rate, nominal money supply. And what are real numbers? A real wage, a real interest rate, a real exchange rate, output,
रियल जीडीपी, डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो. व्हाट इज एक्चुअली नॉमिनल, किसे हम नॉमिनल कहते हैं, किसे रियल कहते हैं. व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड रियल. नॉमिनल विल ऑलवेज बी इन मनी टर्म, रियल विल ऑलवेज बी इन फिजिकल टर्म. कोई भी नॉमिनल नंबर होगा वो किस टर्म में होगा, मॉनेटरी टर्म में होगा, और कोई भी रियल नंबर हमेशा फिजिकल टर्म में होगा. तो दिस पेन इज रियल और नॉमिनल. ये रियल है, इसका प्राइस नॉमिनल है. बिकॉज जब मैं प्राइस स्पेंड करूँगा तो प्राइस विल बी 10 रुपीज़ और 100 रुपीज़ और 1000 रुपीज़. दैट इज़ अ नॉमिनल नंबर. सिमिलरली इफ़ यू पे अ वेज, if worker are paid a wage of 100 rupees per hour, is it nominal wage or real wage? 100 rupees है, nominal है. What is the meaning of real wage? How much goods you can buy with that 100 rupees? That will become a real wage. Now how much goods you can buy with 100 rupees? That depend upon the price. If price is also 100 rupees, then you can buy 1 unit. If price is 50 rupees, then I can buy 2 unit. If price is 200 rupees, I can buy half unit. So when you determine real, it is nominal upon price. Price से divide कर देंगे उसे. किसी भी nominal को अगर मैं price से divide कर दूं तो क्या आ जाएगा, real आ जाएगा. और real को price से multiply कर दें तो nominal आ जाएगा. क्लासिकल कंसेप्ट कह रहा है कि इफ देयर इज चेंज इन नॉमिनल इट विल अफेक्ट अदर नॉमिनल बट इट विल नॉट अफेक्ट एनी रियल नंबर्स. लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू चेंज मनी सप्लाई then it will affect another nominal like price. When you change money, money is a nominal factor, money itself is nominal, but you change money, it will change the price. Price is another nominal, but what will not change is real, that is m by p will remain, because ये दोनों किस proportion में बढ़ जाएंगे, same proportion में बढ़ जाएंगे, तो real will remain. So change in money will not affect any real variable like employment, output, real money supply. इसलिए कहते हैं money neutral होता है. In the classical model money is neutral, neutrality of money. Keynes do not agree with that concept. Keynes का कहना है money neutral. By using money I can affect real also. Money monetary policy can be used to affect the GDP. Classical view में money neutral है. There is a dichotomy. उसे हमें elaborate करना भी. Just you are getting familiar with the term. So if I use the term classical dichotomy, dichotomy means separation between nominal variable and real variable. But sir, when you talk about nominal GDP and real GDP, the difference taken is that real GDP are counted on the base price that is taken. हाँ, तो बेस प्राइस कर लिया, इसका मतलब हमने प्राइस को कांस्टेंट कर दिया, तो जो भी चेंज होगा वो चेंज से फिजिकल क्वांटिटी की वजह से हो सकता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रियल. मॉनेटरी टर्म में लिखता है बट उसका इंटरप्रिटेशन तो रियल होगा ना, बिकॉज यू हैव केप्ट द प्राइस कांस्टेंट. तो प्राइस कांस्टेंट रख दिया तो जो भी चेंज हो रहा है इट इज नॉट ड्यू टू चेंज इन प्राइस बट इट इज ड्यू टू चेंज इन दी क्वांटिटी. तो व्हेन वी से क्लासिकल डाइकोटमी इट मीन्स अ सेपरेशन बिटवीन नॉमिनल एंड दी रियल वेरिएबल. सो क्लासिकल फॉलो द क्लासिकल डाइकोटमी. केन्स डू नॉट एग्री विद द टर्म क्लासिकल डाइकोटमी. अब ये क्वेश्चन इनफैक्ट इफ यू जस्ट सी द पास्ट ईयर पेपर then ये दोनों ही पेपर आप याद रखिएगा. आई विल बी शोइंग दिस फॉर इकोनॉमिक सर्विस, दिस नॉमिनल रियल जीडीपी का डिफरेंस. द टर्म क्लासिकल डाइकोटमी इट हैज़ बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स. व्हाई आर द कंसेप्ट ऑफ डाइकोटमी एंड न्यूट्रलिटी सो इम्पॉर्टेंट इन क्लासिकल थियरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. सो अभी आपको सिर्फ मैंने टर्म बता रखा बट इफ इट इज अ 15 मार्क का क्वेश्चन सो यू नीड टू इलैबोरेट इट. तो इट विल बी इलैबोरेटेड इन दिस क्लास ओनली. दिस क्वेश्चन वाज अगेन आई थिंक 22 में भी था. डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ डाइकोटमी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ मनी इन द लाइट ऑफ क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड केनेशियन. तो एटलीस्ट क्लासिकल मॉडल के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं. सेम क्वेश्चन है. पेपर में देखते समय याद रखिएगा आप जो हैव टू, ये साइट पे भी अवेलेबल होगा. ये ऑप्शनल का पेपर भी जो पेपर 1 का होगा वो उसमें अपलोडेड होगा. सो कैन रेफर बिकॉज क्वेश्चन बैंक यूपीएससी का सेम है. यू विल फाइंड सेम क्वेश्चन इन बोथ. तो प्रैक्टिस करने के लिए इट विल बी बेटर. लाइक दिस ईयर 25 में द क्वेश्चन वाज व्हाट इज क्लासिकल डाइकोटमी, इज इट सेम एज न्यूट्रलिटी ऑफ मनी. क्वेश्चन हाउ टू
answer this question. Classical dichotomy है और neutrality है money. Just see this question. 24 के अंदर भी है, critically examine the phenomenon of classical dichotomy. 24 में भी वही क्वेश्चन है, 25 के अंदर भी वही क्वेश्चन है. तो many question you will find repeated. There are limited number of question in the classical model और वही क्वेश्चन साइक्लिकल फॉर्म में बार बार रिपीट होकर आ रहा है. क्लियर? ट्वेंटी 25 का क्वेश्चन इनफैक्ट जैसे इस साल के क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्विस में 25 का क्वेश्चन है. इन दैट 20 मार्क्स का एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ISLM टॉपिक का. विल बी कवरिंग दिस in this section, but very easy numerical. But just you have to, given the function, you have to derive IS equation, right, LM equation, find income and intercept. Just only the last part was a little difficult, but otherwise 15 marks was easy. Then as one question was also there in optional, the question was in fact difference between the classical and Keynesian. This question was here. 17th. Explain the major difference between classical and Keynesian macroeconomics. That was a compulsory question there. So if the question is that much direct, what is the difference between classical and Keynesian? So there are many differences. How to write it in the form of answer. So what are the main differences between classical and Keynesian? टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखना, प्रेफरेबली टेक वन पॉइंट एंड राइट वन पैराग्राफ, टेक अनदर पॉइंट एंड देन राइट नेक्स्ट पैराग्राफ. सो व्हाट यू विल बी राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ आंसर, just write down that. I'm just dictating you the answer to this question. What is the difference between classical and Keynesian? You have written in the form of tabular form the shorter point, but you have to write it in a proper sentence. So just write it down. डायग्राम की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 10 मार्कर जब क्वेश्चन होंगे ना, 10 मार्कर क्वेश्चन में ऑप्शनल में यू गेट 2 साइड. इन इफ दिस क्वेश्चन इन इकोनॉमिक सर्विस कंपल्सरी यू हैव ओनली 5 मार्क्स, जस्ट 1 साइड. तो यू हैव टू यूज़ दैट स्पेस वेरी केयरफुली. ठीक है, जहाँ रिक्वायरमेंट होगी आई विल एक्सप्लेन. ग्राफ तो आ जाएगा बट इसका यूज़ नहीं है अभी. इकोनॉमिक सर्विस में 5 मार्क का क्वेश्चन में जस्ट यू हैव 1 साइड, दैट्स इट. राइट डाउन. क्लासिकल मैक्रोइकोनॉमिक्स, क्लासिकल मैक्रोइकोनॉमिक्स, क्लासिकल मैक्रोइकोनॉमिक्स is long run description of economy. Classical macroeconomics is long run description of economy. Long run description of economy. While Keynesian macroeconomics is short run description of economy. Keynesian macroeconomics is short run description of economy. Short run description of economy. Next paragraph. Classical macroeconomics is supply side economics, as after comma as output get determined by supply side, as output get determined by supply side, as output get determined by supply side, output get determined by supply side. On the other end, Keynesian economics, is demand side economics,
as output get determined by aggregate demand, as output get determined by aggregate demand, output get determined by aggregate demand. Next paragraph. Classical macroeconomics believes that there is always full employment in the economy. There is always full employment in the economy. There is always full employment in the economy. And it is guaranteed by flexibility of wage. It is guaranteed by flexibility of wage. It is guaranteed by flexibility of wage. Guaranteed by flexibility of wage. On the other hand, Keynes believed that economy is characterized by unemployment. Keynes believed that economy is characterized by unemployment. Economy is characterized by unemployment. Economy is characterized by unemployment. And unemployment arises due to wage rigidity. Unemployment arises due to wage rigidity. Unemployment arises due to wage rigidity. This was, don't write in this form, जो आप नोटबुक में जैसा आपको दिख रहा है वैसे लिखना है. Next paragraph. According to classical economics, supply creates its own demand. Supply creates its own demand. According to classical economics, supply creates its own demand. Within bracket, just mention Say's law. Supply creates its own demand. This is because production generates income. This is because production generates income. Production generates income, and that income is spent on goods. And that income is spent on goods. That income is spent on goods. So they believe that is classical, they believe that money only perform the role of medium of exchange. Money only perform the role of medium of exchange. Money only perform the role of medium of exchange. And money is demanded only for transaction purpose. And money is demanded only for transaction purpose. Money is demanded only for transaction purpose. Money is demanded only for transaction purpose. Next paragraph. On the other end, Keynesian macroeconomics believes that
money also perform the role of money also perform the role of money also perform the role of medium store of value. Money also perform the role of store of value. Money also perform the role of store of value. So in addition, money is also demanded for speculative purpose. 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 ठीक है, आपको ऐसे आंसर में सिर्फ वो टर्म यूज करना है. नो नीड टू इलेबोरेट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्पेकुलेटिव. जस्ट इनकॉर्पोरेट दैट. नेक्स्ट पैराग्राफ. In classical macroeconomics, output is determined by supply side only. Output is determined by supply side only, as classical AS is vertical line. As classical AS is vertical line. As classical aggregate supply curve is vertical line. Classical AS is vertical line. On the other end, in Keynesian model, output get determined by aggregate demand. Output get determined by aggregate demand. Output get determined by aggregate demand. Next paragraph. Next paragraph. Classical macroeconomics assume that there is a dichotomy or separation. There is a dichotomy between nominal variables and real variables. There is a dichotomy between nominal variables and real variables. There is a dichotomy between nominal variables and real variables. Nominal variables and real variables. It arises due to neutrality of money. It arises due to neutrality of money. It arises due to neutrality of money. However, in Keynesian macroeconomics, change in nominal variable can affect real variables. Change in nominal variable can affect real variables. Change in nominal variables can affect real variables. In that sense, money is not neutral in Keynesian model. Money is not neutral in Keynesian model. Money is not neutral in Keynesian model. Money is not neutral in Keynesian model.
So you have just written down the main point of difference between the classical model and the Keynesian model. So if you get this question again for either 5 mark or for 10 mark, then that much information is enough, and preferably write in this format. So you have written, I think, about 150 words. So that much content is needed in order to answer that question, difference between the classical and the Keynesian macroeconomics. Clear? Now we have to study both model in detail. So when we study both model in detail, first we go by the classical, macroeconomics model. See, when you use this term classical macroeconomics model, that model has in fact 3 parts. That model has 3 parts. One is a classical aggregate supply. This will become first tool. मॉडल को समझने के लिए हमें पहले टूल डेवलप करने हैं. तो व्हाट आर द टूल्स टू एक्सप्लेन क्लासिकल AES, क्लासिकल AD. तो फर्स्ट वी एक्सप्लेन द क्लासिकल AES, then we will explain classical AD, that will become the second tool. Third will be classical theory of interest rate. Classical theory of interest rate, also referred as loanable fund theory. Classical theory of interest rate, also referred as the loanable fund theory. So when we study the model, then we use classical AS, classical AD. When we study the classical AS, we will derive it properly. There is a complete chapter in Freund. You will be referring to chapter number 3. Complete chapter is devoted just to explain how we derive classical AS, and that classical AS is going to be a vertical line. But why it is a vertical line, when it will shift, when it will not shift, all those things will be explained in this chapter. So first we explain the classical AS, then we explain the classical AD. Why classical AD is a rectangular hyperbola, when it will shift, when it will not shift, all those things will be explained in the form of classical AD. Third, what determines the rate of interest in the classical model? Demand for loanable fund, supply of loanable fund, their intersection will determine the rate of interest in the classical model. तो इस मॉडल को समझने के लिए फर्स्ट वी हैव टू डेवलप 3 टूल्स, एंड कंटेंट वाइज इट इज चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4. Chapter number 3 and chapter number 4, these 2 chapters from Freund. Chapter number 3 और chapter number 4 पढ़ रहे हैं Freund से. ठीक है, तो these 2 chapters is good enough to answer in fact any question on the classical model. कोई भी question classical model का है, और generally you get 1 or 2 question every year, and you can answer all question just by referring to chapter number 3 and chapter number 4. Clear? So one part is basically to explain the classical model, we develop classical AS, classical AD and loanable fund. Similarly, when we study the Keynesian model, so when we study the Keynesian approach or Keynesian model, in that Keynesian model we will derive, one will be the goods market equilibrium, next will be the money market equilibrium, and third will be the labor market or factor market. Goods market, labor market and money market. So when we have a goods market equilibrium in macroeconomics, goods market equilibrium means when demand for goods is equal to supply of goods. डिमांड फॉर गुड्स इक्वल टू सप्लाई ऑफ गुड्स को आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे जब इनकम इक्वल टू स्पेंडिंग हो जाए. इनकम इज इक्वल टू स्पेंडिंग. इनकम मीन्स वाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वही डोमेस्टिक इनकम होता है. तो हमने इनकम की जगह क्या लिखा है, वाई, और स्पेंडिंग का मतलब कंजम्पशन स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ऑल आर कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड. तो जब आप लिखोगे y इक्वल टू AD, तो एक्चुअली केनीशियन मॉडल कर रहे हैं हम.
but Y stands for income here, AD stands for spending. So first letter I and first letter S here. So whenever I write IES curve, then I stands for income, S for spending. So when income is equal to spending, then which market is in equilibrium? So what does IES curve signify? Goods market equilibrium. So we have to study goods market equilibrium first. We will study goods market equilibrium first when we start the Keynesian model. First we study the income and spending part. So for that purpose Dornbusch and Fisher reference book में वहाँ chapter income and spending का एक complete chapter है. Then we move from goods market to money market. What does money market equilibrium require? Money demand equal to money supply. So for money market you write money demand equal to money supply. मनी डिमांड को टेक्निकली मैक्रो में कहते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस. लिक्विडिटी प्रेफरेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म लिक्विडिटी प्रेफरेंस? वी प्रेफर टू कीप लिक्विड एसेट. एंड व्हाट इज द मोस्ट लिक्विड एसेट? कैश. सो डिमांड फॉर मनी इज डिमांड फॉर कैश. डिमांड फॉर मनी इज डिमांड फॉर कैश. सो व्हेन लिक्विडिटी प्रेफरेंस इज इक्वेटेड टू मनी सप्लाई. अब यहाँ पे लेटर एल or M. So when you write LM, L for liquidity preference, M for money supply. So when money demand is equal to money supply, then we have, so LM curve repaint money market equilibrium, IS curve repaint goods market equilibrium. So we study first IS curve, then we study LM curve. When we integrate both these two, then in economy you get aggregate demand curve, but that will be the aggregate demand curve in which model? AD हम क्लासिकल का अलग डिराइव करेंगे, केनीशियन का अलग डिराइव करेंगे. केनीशियन टूल अलग है, क्लासिकल टूल अलग है. तो भाई that means along this curve both market will be in equilibrium, goods as well as money. And from labor market we will derive aggregate supply curve. So when we have AD-AS intersection, then how many market will be in equilibrium? When AD-AS intersection is there, along AD which market is in equilibrium? Both market. And along AS, labor market. So at the intersection of AD and AS, all three market will be in equilibrium. So when we study the Keynesian model, then the tool will become this. So for that purpose we will be referring to three different chapter in the Dornbusch and Fisher. तो हमारे लिए उसका रेफरेंस बुक अलग हो जाएगा. That means you can refer to the Freund also, but it will be better to go by the Dornbusch and Fisher because that will be very close to your requirement. जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज स्लोप वगैरह का इंटरप्रिटेशन है, लाइक दिस क्वेश्चन इटसेल्फ. पहला क्वेश्चन जो ऑप्शन में भी आता है, इंटरप्रेट द स्लोप ऑफ IS कर्व. तो यू मस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट स्लोप, देन ओनली वी कैन इंटरप्रेट इट. तो व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्लोप ऑफ IS कर्व? Why is it normally negatively sloped? It is a very easy question. इसमें कोई डिफिकल्टी है ही नहीं. You must know what is the meaning of the term, you must know what is the slope, मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं और उसको इंटरप्रेट कर देना नेगेटिव स्लोप क्यों है वो. और स्लोप के कई क्वेश्चन है. इट इज़ नॉट दैट इट इज ओकेजनली ये क्वेश्चन से आ रखा है. यू कैन फाइंड दिस क्वेश्चन इन ISL न्यूमेरिकल वाले में भी IS कर्व का क्वेश्चन होगा. देन IS curve is locus of equilibrium point in the commodity market, that is goods market. What do points above and below the IS curve signify? मतलब IS curve वगैरह में बना रखा है तो उसके ऊपर के पॉइंट्स क्या बताते हैं और नीचे के पॉइंट्स क्या बताते हैं वो एक्सप्लेन करना है. स्लोप का कंसेप्ट काफ़ी रेलिवेंट है. स्लोप ऑफ IS शेड्यूल अगेन. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी कैन एक्सप्लेन बेटर व्हेन यू आर रेफरिंग टू डॉर्नबुश एंड फिशर बिकॉज वहाँ पे न्यूमेरिकली वो एक्सप्लेन भी हो रहा है. तो just remember for Keynesian model we'll be referring to Dornbusch, Fisher and Starch, DFS short में लिख रहा हूँ. All these chapters are included in your study material. Classical वाले भी chapter 3 and 4 और this as well, Dornbusch and Fisher. Clear? So नहीं बाय नहीं करें, बुक नहीं बाय करनी. आपके स्टडी मटेरियल है वो भी आपको रेफ़र करने को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आई एम रेफरिंग टू दैट बुक. तो वो रेफ़र करके जब मैं क्लास में डिक्टेशन आपको प्रॉपरली मिल ही जा रहा है तो फिर डबल एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं. नो नीड टू रेफ़र. अगर आप रेफ़र करना चाहो जस्ट गो टू दैट बुक,
यू विल फाइंड अ बेटर डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक एज कम्पेयर टू दैट बुक. उसके अंदर जो कंटेंट है वो सब कुछ आपके नोटबुक में आ जाएगा, इनफैक्ट मोर देन दैट आ जाएगा. ठीक है, तो आपको रेकमेंड इट इज़ अपलोडेड देयर. यू कैन इफ़ यू वांट यू कैन रीड दैट चैप्टर फॉर फ्रॉम फ्रॉयन और फ्रॉम डॉर्मिशन फिशर, बट रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज जो कंटेंट आप लिखने जा रहे हैं क्लास के अंदर दैट विल बी वेरी इलेबोरेटेड ऑलरेडी. नो नीड टू डू. ठीक है, सो आई हैव जस्ट इंट्रोड्यूस यू अबाउट द क्लासिकल एंड केनिशियन. ये बस इंट्रोडक्शन यहाँ तक का हो गया कि क्लासिकल ये है और केनिशियन ये है. अब आपको क्लासिकल डिटेल में समझना है, केनिशियन डिटेल में समझना है. ठीक है, तो फॉर द क्लासिकल वी हैव चैप्टर 3 एंड 4. सो वी कैन स्टार्ट फर्स्ट विद द क्लासिकल AS पार्ट, दैट इज चैप्टर नंबर 3. ठीक है, वहाँ से बिगिन करेंगे. So start with the classical model, classical macroeconomics model, and you are mainly referring to chapter number 3, Freud. This chapter is basically explaining only one term, that classical aggregate supply curve is vertical line. So as stated earlier, classical model has 3 components: classical AS, classical AD, and low level fund theory of interest. In this chapter we will explain only the classical aggregate supply curve. So we are explaining basically the classical model. That chapter initial, if you just read the initial pages, that chapter also gives you an overview what was the thought before classical. Classical से पहले भी इकोनॉमिक्स थी. हम क्लासिकल से पढ़ रहे हैं क्योंकि क्लासिकल से वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, बट बिफोर क्लासिकल ऑल्सो देयर वाज अ कंसेप्ट. सो व्हाट वाज बिफोर क्लासिकल? बिफोर क्लासिकल वाज द मर्केंटलिस्ट. हमारा चैप्टर फोकस करेगा क्लासिकल पे, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बिकॉज इनिशियल पेजेस आर रिटन इन दैट, द बिफोर क्लासिकल इट वाज मर्केंटलिस्ट. एंड व्हाट वाज द बिलीफ ऑफ मर्केंटलिस्ट? दे एक्चुअली बिलीव्ड इन Booleanism. They actually believed in Booleanism. That means the country was supposed to be more powerful if that country has more stock of precious metals. उनके पास अगर stock of metals ज़्यादा है, then that country was supposed to be more powerful. And how a country will accumulate more precious metals? To accumulate more precious metals, you will put a restriction on import. बिकॉज थ्रू इम्पोर्ट द प्रेशियस मेटल विल गो आउट. अगर हम इम्पोर्ट करेंगे तो पेमेंट उस समय मेटल के फॉर्म में हो रहे थे. एंड यू विल बी प्रमोटिंग योर एक्सपोर्ट. सो रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट लाइक इम्पोर्ट कोटा, इम्पोर्ट टैरिफ लगाया रखा है. कंट्रोल ऑन इम्पोर्ट एंड प्रमोटिंग योर एक्सपोर्ट, देयर बाय यू एम टू अर्न मोर एंड मोर प्रेशियस मेटल्स, एंड दैट कंट्री वाज सपोज टू बी मोर पावरफुल. सो दैट वाज द मर्केंटलिस्ट अप्रोच. वहाँ पे if you are controlling the import, that means government need to control that import. There was intervention from the government side. Classical came up with an alternate thought. Their argument is that the country is not powerful due to stock of metals. The country is supposed to be more powerful only if country is able to produce more output. We cannot say that US is more powerful mainly because it has more stock of metals. More powerful because of higher GDP number. China is more stronger because of higher GDP number. We are not calling them a rich country, we are calling them a developed country. तो जो real analysis है, that real analysis was highlighted by classical model. They said that economy will be more powerful if economy is able to produce more output, and output is a real number. So they shifted that focus from metal to real things. If a country is able to produce more of output, but question is how you can produce more of output? Classical model में output किसका function है?
It is a function of labor, it is a function of capital, it is a function of technology. The economy can produce more of output if you have better labor, more productive labor, more machinery, better technology. So classical model is all about that. So start में just you can write for the information whatever the mercantilist thought, but the focus here will be basically on the classical concept. So just write on that part only. क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप नोट में रखो. इट इज़ नॉट नेसेसरली ऑलवेज अ क्वेश्चन पर्पस, बट योर अंडरस्टैंडिंग विल बिकम बेटर फॉर द क्लासिकल मॉडल इफ यू नो what was the thought prior to the classical. Classical economics emerged as a revolution against a body of economic principle known as mercantilism. Mercantilism, underline that word, mercantilism. So the features of mercantilism were A, Booleanism, that is a belief that wealth and power of a country are determined by wealth and power of a country are determined by stock of precious metals. Wealth and power of a country are determined by stock of precious metals. And B, the belief in their need for state action. To direct state action, that is government action, to direct the development of capitalist system. Next paragraph. In contrast to mercantilist, after comma, classical economists emphasized the importance of real factors. Underline the word real factors. Importance of real factors in determining the wealth of country, and they stress the optimizing tendency of free market. मतलब if you leave the market free, वो अपने आप ऑप्टिमाइज कर लेगा. इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट विल वर्क एफिशिएंटली. क्लासिकल थॉट में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन लीस्ट होगा, लेजर्स फेयर पॉलिसी, लीस्ट इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड.
बिकॉज मार्केट को उसने क्या अज्यूम कर रखा है, वो ऑलरेडी एफिशिएंट है. इफ़ यू लीव द मार्केट ऑन योर ओन, इट्स ओन, it will work efficiently, it will always optimize on its own. So that was basically the thought followed by the classical. That is thought followed by the classical. They emphasize on that the market will work efficiently, but it was also based upon the belief that what is the nature of the market. उन्होंने assume कर लिया कि market competitive है. Market के भी कई form होते हैं, monopoly होता है, monopolistic है, oligopoly है. So what they assumed? They assumed competition. They assumed that market is already competitive, and a competitive market is always efficient. That was their thought. ठीक है? So we will now we have to basically derive the classical aggregate supply curve, and for deriving the classical aggregate supply curve, certain tools are there, starting from the production function, then labor supply, then labor demand. ठीक है? First labor production function. Start first with if you just refer to that chapter, there are certain subheadings there. So I will start first with the production function. Production function. Production function part first. So production is said to be a function of, production means here y, it is basically said to be a function of capital and employment. Employment को n से denote करना है, labor को employment के term में relate करना है, employment को n से denote करना है. Consider this k constant. So if I draw the production function, production is y as a function of n, keeping capital constant. So keeping capital constant, if I increase only labor, then production will increase. See, if it will be a microeconomics, तो माइक्रो में क्या होता है, कीपिंग कैपिटल कांस्टेंट. अगर एक फर्म सिर्फ लेबर को इंक्रीज करे, then initially total product increases at increasing rate, then total product increases at decreasing rate, and then finally total product starts declining. तो वो माइक्रो में है एक फर्म के लिए. फर्म के लिए वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और नेगेटिव रिटर्न आ गया. नाउ इन मैक्रो इकोनॉमिक्स देयर आर मेनी फर्म्स. इफ देयर आर मेनी फर्म्स, देन फॉर सम फर्म इट कुड बी डिक्रीजिंग, इट फॉर सम फर्म इट कुड बी इंक्रीजिंग. सो एग्रीगेट इट कुड बी कांस्टेंट आल्सो. सो इनिशियली यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. कांस्टेंट का मतलब यहाँ लाइन स्ट्रेट है. देन इट विल बी अ डिमिनिशिंग रिटर्न, दैट इज स्लोप इज डिक्लाइनिंग. So this is y, this is basically a function you have written. Y is a function of capital which is constant and a function of employment. That means if employment is n1, then output will be determined from the function as y1. If employment is n2, then output will be determined from function as y2. मतलब employment will determine output. पहले we have to determine employment. That employment will determine output according to this production function. And from this production function you can find marginal productivity of labor, MPN. Second thing ये बताएं, when I am writing this equation, I have kept capital constant. So if capital will change, then what will happen? Suppose capital stock increases, then what will be the impact on this line? Because you have not written capital here, it is based upon a constant capital. So when capital will change, then this function will shift. ये shift हो जाएगा. With more machinery, same labor can produce more of output. अगर labor more productive हो जाए तो same labor can produce. If technology improves, then also same labor can produce more of the output. So just remember that this function can
shift due to change in capital, due to change in productivity, due to change in technology. कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से वो शिफ्ट हो सकता है. एम्प्लॉयमेंट चेंज होगा तो सिर्फ मूवमेंट होगा. इफ एम्प्लॉयमेंट विल चेंज फ्रॉम N1 to N2, you simply move from one point to another point. But if technology will change, capital will change, productivity will change, then the entire curve will shift. Now from that production function you can find marginal productivity of labor. And what is the meaning of that term marginal product? Marginal product is what? Marginal means additional. So marginal product means additional product. Additional product due to additional labor. डेल्टा वाई बाई डेल्टा एन कर देंगे. डेल्टा वाई बाई डेल्टा एन करने का मतलब क्या? मैथमेटिकली जब आपने डी वाई बाई डी एन कर रखा, मतलब डी वाई बाई डी एक्स कर लिया, you actually get slope. Slope of what? Slope of production function. So what is slope of production function? Marginal product of labor. Slope of production function is marginal product of labor. So if that production function is a straight line है मतलब उसका slope constant है. Straight line का slope constant हो गया. कांस्टेंट होने का मतलब है लाइन यहाँ पे आपको ऑरिएंटल रखनी है. उसके बाद स्लोप क्या हो रहा है? ये फ्लैटर कर्व हो रहा है. स्लोप इज डिक्लाइनिंग. स्लोप इज डिक्लाइनिंग, दैट मीन्स मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज डिक्लाइनिंग. दिस इज MPN, marginal productivity of labor. From production function I will derive marginal product. तो अगर ये फंक्शन शिफ्ट हो गया, तो अगर ये कर्व शिफ्ट हो गया तो नीचे वाला कर्व भी शिफ्ट हो जाएगा. बिकॉज ये MPN हमने कहाँ से डिराइव किया है? इस कर्व से डिराइव किया. सो इफ दिस कर्व विल शिफ्ट, एंड इट कैन शिफ्ट बिकॉज ऑफ technology, because of capital, because of productivity. So when this function will shift, you have to shift function MPN curve also. Let's write main point here. Which one? MPN is basically derived from the production function. वो फंक्शन से डिराइव हो रहा है. फंक्शन से मतलब दैट मीन्स इफ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड देन स्लोप डिक्रीज, डिमिनिशिंग रिटर्न, देयरफॉर इट विल बी अ डिक्लाइनिंग कर्व. राइट. एंड प्रोडक्शन फंक्शन समराइजेस, production function summarizes production function summarizes the relationship between production function summarizes the relationship between production function summarizes the relationship between total input and total output, total input and total output, total input and total output, assuming a given technology, assuming a given technology, assuming a given technology, full stop. The short run production function is, the short run production function is a technical relationship. The short run production function is a technical relationship. Short run production function is a technical relationship that determines the level of output, that determines the level of output given the labor input, that determines the level of output given the labor input, given the labor input. So we must note that this production function can shift up. We must note that this production function can shift up
this production function can shift up due to a improvement in technology, b increase in capital stock, c improvement in productivity or efficiency, of labor, हाँ तो कांस्टेंट माने जो कांस्टेंट है अगर वो चेंज हो जाता है, कांस्टेंट नंबर कैन बी 100 बट कांस्टेंट नंबर कैन बी 150 ऑल्सो. तो इफ यू चेंज इट फ्रॉम 100 to 150 then it will shift. That means based upon one constant number you have this line, based upon another constant number I can draw a line above it also. ये लाइन का पोजीशन तो फिक्स नहीं कर रहे ना. This line can be drawn above it also, it could have been drawn below it also. That depend upon technological factors. मतलब जो if you have drawn any particular curve, like this based upon a given capital, this function can shift up also like this. So what could be the difference between these two? You can say that same labor was earlier producing less output, but now same labor is producing more output. But how same labor can produce more output? Same labor can produce more output if they are become more efficient. If they are getting better technology, then same labor can produce more of the output. So now everything actually depends upon what? How much output will be produced, that depends upon how much labor is employed. And how much labor will be employed, that will be determined by the labor market. So now we will have to discuss two things: who will demand labor and who will supply labor. So who demands labor? Firms. How much labor they will demand? Market is competitive, there are many firms in the market. Each firm will demand labor. How much labor they will demand? What is their objective? Their objective is to maximize their profit. So how much labor they will employ so that their own profit get maximized. Profit maximizing condition कहता है MR equal to MC होना चाहिए. Marginal revenue must be equal to marginal cost. But if I am saying that market is perfectly competitive, तो perfect competition में firm का price और marginal revenue दोनों सेम हो जाते हैं. प्राइस और MR की वैल्यू सेम हो जाएगी परफेक्ट कंपटीशन में. तो इन प्लेस ऑफ MR यू कैन राइट प्राइस, एंड इन प्लेस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट व्हाट यू हैव टू राइट, वी हैव टू एक्सप्लेन दिस. तो फर्म विल ऑलवेज एम्प्लॉय दैट मच ऑफ लेबर वेयर देयर ओन प्रॉफिट गेट मैक्सिमाइज. सो वी हैव टू डिटरमाइन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन. सेकंड, हु विल सप्लाई लेबर? हाउस होल्ड, इंडिविजुअल. हाउ मच लेबर दे विल सप्लाई? What is their objective? Their objective is to maximize their utility, and they get utility from not only wages, they get utility from not working also. You need Saturday, Sunday also. Even if your wages are more, you will not work 24 hours. So you get utility from wage or income and also from leisure. So now we will derive it into two parts. We नेक्स्ट कम टू द लेबर मार्केट. लेबर मार्केट के अंदर दो पार्ट हो जाएंगे, एक लेबर डिमांड और एक लेबर सप्लाई का पार्ट. सो ये फर्स्ट हेडिंग वाज प्रोडक्शन फंक्शन. नाउ मूव फ्रॉम प्रोडक्शन फंक्शन टू द लेबर. मेक इट लेबर मार्केट फर्स्ट. लेबर मार्केट. Read in first. The classical economist assumes that employment of labor is determined by
is determined by employment of labor is determined by forces of employment of labor is determined by forces of demand and supply. Employment of labor is determined by forces of demand and supply in the labor market. Demand and supply in the labor market. Full stop. The main feature of classical labor market analysis, the main feature of classical labor market analysis, the main feature of classical labor market analysis is the assumption that market works well. The assumption that market works well. Market works well. It means firms and individual workers optimize their objective. Firms and individual workers optimize their objective. And they have perfect information. About relevant prices. They have perfect information about relevant prices. Full stop. In addition, there are no barriers. To adjustment of money wage. There are no barriers to adjustment of money wage. And market always clears. Market always clears. What is the meaning of this term? Market always clears means लेबर का डिमांड और लेबर का सप्लाई हमेशा क्या होगा, बराबर होगा. इन दैट वे मार्केट क्लियर हो जाता है. नो एडजस्टमेंट टू मनी वेज का मतलब मनी वेज के एडजस्टमेंट में कोई बैरियर नहीं है. व्हाट कुड बी द बैरियर? वेज हमेशा एडजस्ट करेगा इन सच अ वे दैट डिमांड और सप्लाई हमेशा क्या हो जाए, बराबर हो जाए. नो बैरियर मीन्स देयर इज नो गवर्नमेंट मिनिमम वेज लॉ, नो प्रेजेंस ऑफ लेबर यूनियन, कोई बैरियर नहीं है. सो मार्केट इज ऑलवेज एडजस्टिंग सो दैट लेबर डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू लेबर सप्लाई. एंड व्हाट वी आर अज्यूमिंग, मार्केट के अंदर जितने भी बायर और सेलर हैं उन सबके पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है. रिमेंबर, ये सारे पॉइंट इसलिए रेलिवेंट है बिकॉज when you are studying the classical model we are assuming that the market is competitive. और perfect competition का feature होता है that there is a perfect information. Buyer and seller has same information, there is no asymmetric information. Now given that first we explain the labor demand, then we explain the labor supply. So in the labor market first is demand for labor. ठीक है, पहले इसको समझ लेंगे उसके बाद लिखेंगे. लेबर मार्केट के अंदर दो साइड होंगे. फर्स्ट वी एक्सप्लेन लेबर डिमांड, देन वी एक्सप्लेन लेबर सप्लाई. फर्स्ट फोकस ऑन लेबर डिमांड. ध्यान देना जरा, जस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. आई सेड लेबर इज डिमांडेड बाय फर्म्स. ठीक है, और मार्केट में देयर आर मेनी फर्म्स in the market, so many firms that one single firm cannot affect the market price. And what is the objective of firm? Objective of firm is to maximize profit. And what is profit maximizing condition? Marginal revenue must be equal to marginal cost. In place of marginal revenue you can write
प्राइस बिकॉज ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर, तो जो प्राइस होगा वही मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट, ध्यान देना इस पे। यू हैव रिटन वाई एज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, जहाँ पे कैपिटल क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द टर्म मार्जिनल कॉस्ट? चेंज इन टोटल कॉस्ट और एडिशनल कॉस्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। आप जरा ध्यान से बताएंगे, हाउ यू कैन प्रोड्यूस एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट? कैपिटल तो कांस्टेंट है, तो अगर कैपिटल कांस्टेंट है देन आई कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ आउटपुट ओनली बाय यूजिंग मोर लेबर। तो जो लेबर का कॉस्ट होगा वही मार्जिनल कॉस्ट होगा, बिकॉज कैपिटल तो फिक्स है, तो वट एवर बी द लेबर कॉस्ट दैट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट। अब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उससे एग्जाम्पल से बनेंगे। इफ आई से दैट वेज रेट इज 100 रुपीज़ पर आवर, वर्कर को आपने 100 रुपये वेज दिए 1 घंटे का वर्क करने के लिए, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट 100 हो गया? नहीं। यू आर गिविंग 100 रुपीज़ टू द वर्कर फॉर वर्किंग एन आवर, इज इट नेसेसरी दैट वर्कर विल प्रोड्यूस ओनली 1 यूनिट एन आवर? 1 घंटे में वो 1 से ज़्यादा भी बना सकता है। अब 1 घंटे में वो जितने भी क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है, दैट क्वांटिटी विल बी कॉल्ड एज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, बिकॉज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म मार्जिनल प्रोडक्ट? मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन लेबर, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर कितने आउटपुट बनाएगा वो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। तो अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर 2 कह रहा हूँ, तो you employed labor for an hour and you are giving 100 rupees to that labor. In that 1 hour labor is producing 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का कॉस्ट 100 होगा, 1 यूनिट का कॉस्ट 50 हो गया। 50 का मतलब जो वेज है उसको किससे हमने डिवाइड कर दिया, एमपीएन से डिवाइड कर दिया। अगर एमपीएन 4 हो तो 100 रुपीज़ का कॉस्ट आएगा फॉर 4 यूनिट, सो फॉर 1 यूनिट इट विल बी 25 and that 1 unit cost will be written as cost. So what do you write in place of marginal cost? Wage divided by what? MPN. तो यहाँ पे लिखेंगे wage upon MPN. Clear है? That means this is basically the, and can you write this equation as wage equal to price multiplied by MPN? लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर मैं प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसकी वैल्यू आ जाती है, तो इस पूरे नंबर को कहा जाता है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या निकाल दिया हमने, वैल्यू निकाल दिया। तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट, वेज। सेम थिंग कुड बी रिटन एज W by P इक्वल टू, व्हाट इज W by P? W ये रह गया, P यहाँ लिख दिया। W by P is equal to what? MPN. And what is W by P? Any number divided by P will become what? Real wage. तो रियल वेज किसके बराबर होगा, MPN के बराबर होगा। इफ रियल वेज इज इक्वल टू MPN देन प्रॉफिट गेट मैक्सिमाइज। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है। यू हैव रिटन बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन। तो व्हेन प्रॉफिट गेट मैक्सिमाइज, when firm employ that much of labor where real wage is equal to MPN. Real wage is equal to MPN. And what is the shape of MPN curve? MPN curve का shape सबसे पहले यहाँ डिराइव कर रखा आपने। MPN curve ये है, तो just draw this MPN curve. MPN curve is can draw a little horizontal part and then the negative slope part. जैसे MPN। तो अब आप ये बताओ कि अगर मैंने वेज रेट को यहाँ पे कोई नंबर मार्क कर रखा है W1 by P1 रियल वेज, तो ये W by P MPN के बराबर होगा। दैट विल डिटरमाइन द डिमांड फॉर लेबर। तो लेबर का डिमांड फिर N1 होगा। अगर रियल वेज मैंने ये मार्क कर रखा है तो लेबर का डिमांड ये है, और रियल वेज ऊपर कर लें तो लेबर का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रियल वेज कम कर लें तो लेबर का डिमांड ज़्यादा हो गया। दैट मीन्स इफ यू कैन ड्रॉ डिफरेंट लाइन, आई कैन ड्रॉ लोअर लाइन ऑल्सो, देन लेबर डिमांड विल बी मोर। इसलिए MPN कर्व को ही क्या बोलते हैं, लेबर डिमांड कर्व कहते हैं।
जो MPN कर्व है वही क्या है हमारा, लेबर डिमांड कर्व है. बिकॉज हाउ मच लेबर अ फर्म विल ऑलवेज डिमांड, फर्म विल ऑलवेज डिमांड दैट मच ऑफ लेबर वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट is equal to real wage, or VMP is equal to nominal wage. ये nominal है और ये real है. nominal बोलोगे तो VMP करना, real बोलेंगे तो MPN करेंगे. real is equal to MPN, nominal equal to VMP. this is one part. लेबर मार्केट का वन पार्ट है लेबर डिमांड साइड. ठीक है, अगेन आई रिपीट, firm will always maximize the profit when firm produces that much output where MR equal to MC. In place of MR you have written price because classical believed in perfect competition. Under perfect competition MR is equal to price, and marginal cost is actually marginal labor cost. And what is marginal labor cost? Wage divided by MPN. Wage divided by MPN. And why you are dividing by MPN? For that purpose just remember this numerical formula. If a marginal product of labor is 2 and wage is 100, then for 1 unit the cost will be 50. So MPN curve is the marginal, MPN curve is the labor demand curve. So write up to this part first, BMP. Right, labor is demanded by, labor is demanded by, पर लिख लेना, labor is demanded by firms, labor is demanded by firms, labor is demanded by firms, and competitive firm will produce, labor is demanded by firms and competitive firms will produce, competitive firms will produce, competitive firms will produce that much output where, that much output where, that much output where its own profit get maximized, that much output where its own profit get maximized. Full stop. It requires that, it requires that MR is equal to MC. It requires that MR is equal to MC. Full stop. In a competitive market, in a competitive market, MR is equal to price. In a competitive market, MR is equal to price, and marginal cost of labor is equal to, and marginal cost of labor is equal to, marginal cost of labor is equal to nominal wage divided by marginal product of labor. Marginal cost of labor is equal to nominal wage divided by marginal product of labor, divided by marginal product of labor. फॉर्मूले के टर्म ऐसे लिख दो आप उसे, मार्जिनल कॉस्ट होता है नॉमिनल वेज अपॉन MPN. Marginal cost is wage upon MPN. Therefore, at profit maximization, following conditions will hold. At profit maximization, following conditions will hold. Following conditions will hold. Following conditions will hold. Just write down these conditions. First, write MR equal to MC. In place of MR, write down price. In place of MC, write down W by MPN, and then in this form as well as in this form.
thus below that, thus the profit maximizing quantity of labor, thus the profit maximizing quantity of labor, thus the profit maximizing quantity of labor demanded by a firm is determined by equality of real wage and marginal product of labor, real wage and marginal product of labor, so that is why marginal product of labor curve is called, marginal product of labor curve is called labor demand curve. Marginal product of labor curve is called labor demand curve. ठीक है, लेबर का डिमांड कर्व याद रखेंगे, एमपीएन कर्व होता है. क्लियर? लेबर डिमांड कर्व इज एमपीएन कर्व. So you can draw this diagram then. एक्सेस पे या WIP लिखेंगे, एक्स एक्सेस पे N एम्प्लॉयमेंट. This is one side of the market, which is a demand side of the market. Employment will be determined by demand and supply equality. So labor is demanded by firms. Now discuss the supply side. So who will supply the labor? Labor will be supplied by the individuals or household. And how much labor they will supply? They will supply that much of labor where their own utility get maximized. And from where they get utility? From wage as well as by leisure. Next subheading is supply of labor. Supply of labor. So labor will be supplied by household or individual. And how much labor they will supply? They will supply that much of labor where their own utility is maximized. Just see this description now. I will draw two parts of the diagram. Left side diagram में excess pay I will write here leisure. Right side I will write work. But both side actually you are writing time. In fact, you are measuring the time. Like everyone has endowment of 24 hour. मैं इस डायरेक्शन से मार्क मेजर करूँगा लेजर को, अपोजिट डायरेक्शन से वर्क. Like if I write here 8, how to read this 8? 8 hour of leisure, 16 hour of work. टाइम के दो यूज हैं, लेजर या वर्क. इफ आई राइट हियर 16, देन हाउ टू रीड? 16 आवर ऑफ लेजर, 8 आवर ऑफ. इफ आई राइट 25, देन 24 आवर लेजर. सो इफ 24 आवर लेजर, इनकम विल बी 0. इफ आई राइट 0, देन 0 लेजर, all 24 hour work. By working all 24 hour, you will earn the maximum income. If I write that maximum income as 2400, then what does it mean? By working 24 hour, you earn 2400. So how much is the wage rate? 100 rupees per hour. 24 घंटे वर्क करके 2400 मिल रहे हैं, तो 100 रुपीज़ पर आवर का वेज रेट है. इस दोनों पॉइंट को मैंने स्ट्रेट लाइन से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया. इस लाइन का स्लोप क्या बजाएगा? व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन? 2400 अपॉन 24, that is 100, which is wage rate. तो स्लोप ऑफ दिस लाइन मेजर्स वेज रेट. एक तरीके का बजट लाइन है. दिस इज द चॉइसेस.
Now how much will be the actual work? What is the purpose? Purpose is to maximize utility. Utility को measure करने के लिए you draw actually the indifference curve, and that indifference curve is tangent here. जहाँ पे टेंजेंसी है वो मैक्सिमाइज हो रहा है यूटिलिटी. यू कैन ड्रॉ मेनी इंडिफरेंस कर्व. बजट लाइन के बाहर अचीवेबल नहीं है और बजट लाइन के अंदर का पॉइंट उस पर यूटिलिटी लोअर होगी. तो व्हेन यूटिलिटी गेट मैक्सिमाइज ओनली एट द पॉइंट ऑफ, सपोज आई ड्रॉ टेंजेंसी, यू कैन ड्रॉ टेंजेंसी एनीवेयर, बट सपोज इफ आई ड्रॉ टेंजेंसी हियर और इस टेंजेंसी के करस्पॉन्डिंगली जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट आ गया मेरा 10. तो व्हाट इज द इंटरप्रेट, हाउ टू रीड दिस? 10 आवर ऑफ लेजर. हाउ मेनी आवर ऑफ वर्क देन? 14. So you are working for 14 hour at what wage rate? Wage rate क्या है यहाँ पे? 100 per hour है. So if I write wage here 100 per hour, at 100 per hour you are working for 10 hour, I get 1 point. ये नंबर यहाँ पे क्या लिख रहा है? 100 rupees per hour का wage rate है. At 100 rupees per hour I am supplying how much labor? 10 hour. 10 hour of work. 10 hour लेजर है, रिमेनिंग 14 आवर ऑफ वर्क है. यू कैन राइट दिस 14. 10 आवर ऑफ लेजर, 14 आवर ऑफ वर्क. इफ वेज रेट इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 20, देन वेज रेट अगर 10 की जगह 20 है तो टाइम तो 24 आवर ही रहेगा. अब मैं 24 आवर अगर वर्क करता हूँ देन आई कैन अर्न 4800. तो यू कैन मार्क दिस नंबर एज 4800. इस 4800 को 24 से कनेक्ट कर लेंगे. नाउ यू हैव अ हायर वेज रेट. वेज रेट के बढ़ने पे वर्किंग आवर पे क्या इफेक्ट होगा? 4800. अगर वेज रेट 200 है तो अगर मैंने 24 आवर वर्क किया तो 24 इंटू 200 विल बिकम 4800. जैसे 2400 कैलकुलेट किया, 24 इंटू 100 किया था, तो आप 24 इंटू 200 करेंगे तो 4800 आ जाएगा. That means if you work for 24 hour and the wage rate is 200 per hour, then how much maximum income you can earn? That maximum income will be 4800. अब आपको सिंपली ये सोचना है कि जब वेज रेट इंक्रीज होगा तो वर्किंग आवर पे क्या इफेक्ट होगा? वेज रेट के बढ़ने पे एक्चुअल में 2 इफेक्ट होंगे. एक होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, another is called income effect. Substitution effect means that substitution effect will induce worker to work more because wage rate is opportunity cost of leisure. Leisure का opportunity cost है. What is the meaning of opportunity cost? Opportunity cost, that means what you are sacrificing. If I say that wage rate is 100 per hour and you are not working for an hour, what you are sacrificing? 100 rupees. If I say wage rate is 200 rupees, now you are not working. How much you are sacrificing now? 200. So at high wage rate, leisure becomes expensive. So when leisure becomes expensive, I will prefer to have less leisure and more work. Substitution effect की वजह से work बढ़ेगा. But income effect, if you are working more at higher wage rate, your income also goes up. At higher income, we tend to consume more of the normal good. Leisure is considered as a normal good. तो जब income बढ़ेगी, then I will prefer to have more of leisure and less of वर्क. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से वर्क बढ़ेगा, इनकम इफेक्ट की वजह से वर्क डिक्रीज होगा. तभी माइक्रो में कहते हैं कि लेबर का सप्लाई का बैकवर्ड बेंडिंग होता है. एक पॉइंट तक वो वर्क ज़्यादा करेगा और उसके बाद वो वर्क, बट दैट विल हैपन फॉर वन पर्सन इंडिविजुअल माइक्रो में. एंड राइट नाउ यू आर स्टडिंग मैक्रो. माइक्रो के टूल को हम यूज़ कर रहे हैं समझने के लिए. तो मैक्रो इकोनॉमी में भी अज्यूम दैट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन दी income effect. That means worker will work more at a higher wage rate. So अब डायग्राम में बताओ worker is working more, तो where I will draw tendency, to the right or to the left? वर्क ज़्यादा करने का मतलब है लेजर कम होगा. तो लेजर कम होने के लिए आप इसको नई टेंडेंसी आप इसके लेफ्ट साइड ड्रॉ कर लीजिए एनीवेयर. जस्ट फ्रीली इसको मार्क कर दिया. अब यहाँ से अगर मार्क करते हैं और ये पॉइंट अगर 8 पे आता है, व्हाट डज इट मीन नाउ? Worker is having 8 hour of leisure and 16 hour of work. So at a higher wage rate, person is having more time for work. And if you connect these two numbers, it is positively slow.
दिस इज योर लेबर सप्लाई कर्व, ये लेबर का सप्लाई कर्व है। तो पहले मैंने लेबर डिमांड डिराइव किया है, अब लेबर सप्लाई डिराइव करेंगे, फिर दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो लेबर का एम्प्लॉयमेंट आएगा। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट डिसाइडेड ओनली बाय फर्म्स, नॉट डिसाइडेड ओनली बाय द वर्कर, डिसाइडेड बाय बोथ। लेबर मार्केट में लेबर डिमांड भी होगा, लेबर सप्लाई भी है। देयर इक्वालिटी विल डिटरमाइन द एम्प्लॉयमेंट। सो फर्स्ट राइट इन दिस कैटेगरी नाउ। इनकम इफेक्ट ये कहता है कि एज योर वर्क वेज इंक्रीजेज एंड यू वर्क मोर, यू अर्न मोर। As we start earning more, we prefer to have more of leisure time, but we can have more of leisure time only when we work less. So due to income effect, working hour will decrease. Due to substitution effect, working hour will increase. They work in the opposite direction. Read. Labor services are supplied by individual workers. Labor services are supplied by individual workers. Labor services are supplied by individual workers. So classical economists assume that individuals attempt to maximize utility. Individuals attempt to maximize utility. Individuals attempt to maximize utility, and utility depends positively on real income and leisure. Real income and leisure. Real income and leisure. So assuming that substitution effect dominate income effect. Assuming that substitution effect dominate income effect. Assuming that substitution effect dominate income effect, we get positively sloped labor supply curve. We get positively sloped labor supply curve. We get positively sloped labor supply curve. Positively sloped labor supply curve. Below that you can draw this diagram. एक्सेस पे यहाँ रखिएगा लेजर लिखना है, राइट साइड वाले में वर्क लिखना है, एंड बोथ आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आवर. वर्क डज नॉट मीन 1%, 2%, इट इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ 1 hour or 2 hour of work. So now we are done basically with the labor demand side and also with the labor supply side. Now the main content begins after that with the determination of employment and output. After this diagram you have to make the subheading as determination of employment and output. Determination of employment and output. Indifference का basically show different combination of two things always which gives you same level of satisfaction. That is why you call it indifference. You are indifferent between these combination. Indifference between leisure
एन इनकम, लेजर और इनकम, हाँ इनकम है एक्सेस पे। डिटर्मिनेशन ऑफ employment and output, determination of employment and output. So now we have in fact started this with writing production function. So y was explained as a function of capital and employment. This was your first equation. Then we have derived a labor demand as a function of real wage, labor supply also as a function of real wage, but ये negative line है और ये positive slope line है, and we are assuming that labor demand is always equal to labor supply, and if they are not equal then what will happen? Classical model पढ़ रहे हैं, डिमांड सप्लाई बराबर नहीं होंगे तो क्या चेंज हो जाएगा? वेज चेंज हो जाएगा। वेजेस फ्लेक्सिबल है। अब इस कंटेंट को आप इस फॉर्मेट डायग्राम के अंदर समझिएगा। फर्स्ट आई विल ड्रॉ द प्रोडक्शन फंक्शन, बिलो दैट आई विल ड्रॉ लेबर डिमांड, एंड थर्ड डायग्राम इज फॉर एग्रीगेट सप्लाई कर्व। फर्स्ट राइट द एक्सेस, यहाँ वाई लिखना है, एन लिखना है। पहला इक्वेशन ये जो फर्स्ट डायग्राम स्टार्ट किया था हमने, प्रोडक्शन फंक्शन। तो इन दैट प्रोडक्शन फंक्शन वी हैव ड्रॉन दिस लाइन अप टू अ पॉइंट इट वाज स्ट्रेट and then it was diminishing. Draw the function first. Y is a function of what? N, keeping capital. अगर वो कैपिटल चेंज हो गया तो पता है क्या आना है? कैपिटल चेंज होने पे ये पूरी लाइन शिफ्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट ड्रॉ द फंक्शन, फ्रॉम दैट फंक्शन वी हैव डिराइव्ड लेबर डिमांड, एंड व्हाट इज द लेबर डिमांड कर्व? लेबर डिमांड कर्व इज MPN. You can call it labor demand ND. Add in this labor supply जो भी derive किया, लेबर डिमांड और सप्लाई के इक्वालिटी से क्या डिटरमाइन होगा? देयर इक्वालिटी विल डिटरमाइन द फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ही यही होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट इन क्लासिकल मॉडल मीन्स दैट एम्प्लॉयमेंट विच एग्जिस्ट एट लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। तो लेबर मार्केट का जहाँ इक्विलिब्रियम आ गया उस पॉइंट पे जितना एम्प्लॉयमेंट है उस एम्प्लॉयमेंट को क्या बोलना है? फुल एम्प्लॉयमेंट है। अब इफ दिस इज द एम्प्लॉयमेंट तो इस पॉइंट को इधर एक्सेस पे एक्सटेंड कर लेना। इफ दिस इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, हाउ मच आउटपुट दिस लेबर विल प्रोड्यूस, हाउ मच आउटपुट दिस लेबर विल प्रोड्यूस, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ से इसको YF लिख देंगे। YF का मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। फर्स्ट वी डिटरमाइन व्हाट? एम्प्लॉयमेंट, एंड देन वी डिटरमाइन आउटपुट। एम्प्लॉयमेंट पहले मार्क करेंगे फिर आउटपुट मार्क करना है, ठीक है। लेबर डिमांड एंड सप्लाई, देयर इक्वालिटी विल ऑल्सो डिटरमाइन द रियल वेज W अपॉन P। तो जस्ट मार्क W1 अपॉन P1। यहाँ से पहले डायग्राम समझ लेंगे, उसके बाद कॉपी कीजिएगा। यहाँ प्राइस लिख रहा हूँ, यहाँ आउटपुट लिख रहा हूँ मैं, P और Y। तो जस्ट टेल मी व्हाट इज द प्राइस हैव टेकन? P1 एक नंबर होगा, कोई नंबर 5, 10 एनी नंबर, सो यू कैन मार्क दैट नंबर हियर P1। एट P1 हाउ मच इज द आउटपुट? ये YF की एक वैल्यू है, 1000, 2000, देयर विल बी सम आउटपुट। तो यू कैन प्लॉट दैट आउटपुट हियर, इस एक्सेस पे यहाँ प्लॉट कर देना। तो जो भी आउटपुट है उस आउटपुट को मैंने यहाँ मार्क करके लिख दिया YF। यहाँ जो आउटपुट आ रहा है YF उसको आपने उस एक्सेस पे लिख रखा है। तो जब प्राइस P1 है देन आउटपुट इज YF, यू गेट 1 पॉइंट। अब जरा सोच के बताइए, डायग्राम पे ध्यान देना। इफ आई से दैट प्राइस इज नॉट P1 बट P2, अ हायर नंबर, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन दिस आउटपुट? इस आउटपुट पे क्या इफेक्ट होगा प्राइस के बढ़ने पे? ध्यान से डायग्राम पे देखिए। इफ प्राइस गोज अप, ये नंबर बढ़ रहा है, तो WYP क्या हो जाएगा? प्राइस के बढ़ने पे WYP, एज WYP विल डिक्रीज एट एनी लोअर नंबर, क्या लेबर का डिमांड और सप्लाई बराबर है?
नो दे आर नॉट इक्वल, बराबर तो सिर्फ यहाँ पे हो रहे हैं। तो अगर मैंने कोई लोअर पॉइंट ले लिया तो लेबर डिमांड इज मोर एंड लेबर सप्लाई इज, और क्लासिकल मॉडल पढ़ रहे हैं, क्लासिकल मॉडल कह रहा है कि अगर लेबर का डिमांड ज़्यादा होगा तो वेज बढ़ जाएगा, लेबर का सप्लाई ज़्यादा होगा तो वेज कम हो जाएगा। तो द मोमेंट रियल वेज विल फॉल, लेबर डिमांड इज मोर एंड लेबर सप्लाई इज, सो वेज विल स्टार्ट राइजिंग। और वो कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक वो दोबारा बराबर नहीं हो जाता। दैट मीन्स प्राइस अगर हमने P1 से P2 कर लिया है तो वेज भी W1 से बढ़ के क्या हो जाएगा? W2 हो जाएगा, सो दैट द रियल विल रिमेन सेम। अगर प्राइस डबल हुआ है तो वेज भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, सो दैट द रियल विल रिमेन सेम। सो इफ रियल वेज विल रिमेन सेम, एम्प्लॉयमेंट विल रिमेन सेम. If employment will remain same, then output will remain. So although price is higher but output remains same. अगर वैसे मैं फिर से प्राइस बढ़ा लूँ, P2 की जगह P3 कर ले, फिर से वही आउटकम आ जाएगा. That means when you connect all these points, you get a vertical line here, and that is classical aggregate supply curve. क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई का बेसिकली ये कह रहा है कि वट एवर बी द प्राइस, आउटपुट विल रिमेन. अब आप मुझे सिर्फ फाइनली ये बताएंगे इन दोनों वेरिएबल में कौन सा नंबर नॉमिनल है और कौन सा रियल है. एक P लिखा और एक Y लिखा है, विच वन इज नॉमिनल, विच वन इज रियल? P नॉमिनल है, वो प्राइस है, आउटपुट और क्लासिकल डायकॉटमी होती है. क्लासिकल डायकॉटमी का मतलब नॉमिनल में चेंज होने पे रियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो प्राइस नॉमिनल है, प्राइस चेंज हुआ उससे रियल पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा. दैट इज द डायकॉटमी हियर. एज प्राइस विल चेंज इट विल नॉट अफेक्ट एनी रियल नंबर. प्राइस चेंज होगा बट उससे रियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. क्लासिकल डायकॉटमी यहाँ से एक्सप्लेन हो जाता है. ऑल्दो वी हैव जस्ट इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक, क्लासिकल AS है, इसमें क्लासिकल AD ऐड करेंगे, फिर लोनेबल फंड थियरी ऑफ आर्गुमेंट ऐड करेंगे, देन इट बिकम द मॉडल. Right now we are just studying or learning the tool to understand the classical system, but from this limited information also we can explain the classical dichotomy. So I just repeat all. We have written the production function first. Yes, from function we have derived the labor demand, and we know labor demand curve is MPN curve. Then we have derived the labor supply, positive slope. Equality of labor demand and labor supply will determine what? Employment. Then after employment you determine output from the function. So we have written one point there, and as price goes up the real wage will fall, the labor demand will be more, and as demand for labor will be more, wage will start rising, and as wage will increase it will continue to increase in such a way that real will become, और real same तभी हो सकते हैं जब प्राइस जिस proportion में बढ़ा है उसी proportion में क्या बढ़ जाए, then only it can remain same. So if real wage will remain same, employment will remain same, output will remain same, whatever be the price. तो यहाँ तक हमने बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई कर्व का डेरिवेशन किया. अब नेक्स्ट आपको बेसिकली इस चैप्टर के अंदर ये करना है कि व्हेन दिस कर्व कैन शिफ्ट एंड व्हेन इट विल नॉट शिफ्ट, दोनों ही समझना है आपको. मतलब व्हाट विल चेंज विच विल कॉज शिफ्ट ऑफ AS, and what will change which will not shift AS. The factor that affect output, factor that do not affect output. मतलब ऐसा क्या चेंज हो जाए जिससे ये एग्रीगेट सप्लाई की लाइन शिफ्ट हो जाए, वो भी सीखना है हमें. और कौन से फैक्टर जिसके चेंज होने पे AS कभी शिफ्ट नहीं होगा. सो दैट इज बेसिकली द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 3. फ्रंट यहाँ तक जो पॉइंट है ये डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट का पॉइंट है. इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, हाउ आउटपुट इज डिटरमाइन and how employment is determined. Employment determined in the labor market, output determined by the production function. Y is determined by production function, and Y is a function of employment. Employment get determined in the labor market by labor demand and labor supply. ठीक है, यहाँ तक आपने बेसिकली ये पॉइंट कर रखा है फॉर दिस थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. इसके डिस्क्रिप्शन से विल बी continuing next from this description of theory of employment and output. That means chapter number 3 from will continue with this. ठीक है.